The bike that I've taken on rent is this one. दूसरा place जो है is Living Roots Bridge. What I was saying guys, वो जो है that is Bangladesh. Beautiful, beautiful Doki. ये reality है भाई. When you travel, you see stuff like that, breaks your heart. Oh, what a view, what a view. It's a new day of the great Northeast Indian road trip guys, and check out the view man. अभी आपको पता है I've been traveling, I've been on the road for over 30 days now. काफ़ी exciting रहा है journey. I've covered so many states, राजस्थान, उत्तराखंड, नेपाल किया मैंने international ride, मेरा पहला वाला international ride फैट बॉय के साथ. वहाँ से वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम और अभी मेघालय. So I have done quite a lot in 30 days and फिलहाल I'm in Shillong right now and I'm exploring this absolutely beautiful place guys. Climate is crazy. यहाँ पर around रात को around 5 degrees होता है. बहुत ठंडा है for a मुंबई गर्ल like me. And but अभी क्या है 30 दिन में थोड़ा आदत पड़ गया है तो कभी कभी शॉर्ट्स में भी घूम लेता हूँ. If you've been following my Insta, you know that I do that a lot. A quick word about the clothes I'm wearing. भाई बहुत ठंडा है. Can't even describe in words how cold it is sometimes. And मैंने काफ़ी अंडरएस्टिमेट किया था वेदर को. I'm wearing 3 layers right now. एक मैंने अंदर एक स्लीवलेस टी शर्ट पहना हुआ है, लाइक अ ड्राई फिट टी शर्ट. उसके ऊपर मैंने मेरा थर्मल पहना हुआ है. उसके ऊपर मैंने हाली का वेस्ट पहना है विच इज़ योर यू नो अगेन अ थर्मल वेस्ट. एंड उसके ऊपर मैंने ये स्वेट शर्ट पहना हुआ है. तो मैंने 3-4 लेयर्स पहना हुआ है. इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी. उसके बावजूद मुझे ठंड लग रही है. आई एम होपिंग द सन स्टेज लाइक दैट फॉर अ व्हाइल. यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि यहाँ पर सनसेट बहुत जल्दी होता है. अराउंड 4 द सन starts going down and starts getting really nippy, really cold. So yeah, I need to pick up something new man. I really need to pick up something new. Some warmer stuff. कल मैंने एक्सप्लोर किया चेरापूंजी एक्सप्लोर किया. आपने देखा है बस फैंटास्टिक. वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेस I've ever been. लकीली वहाँ इट्स नोन एज द वेटेस्ट प्लेस बट वहाँ बारिश नहीं हुआ. गॉट लकी अगेन. मुझे बारिश होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता. मेरे कपड़े सूखते नहीं. आई हैव टू लीव टुमारो फॉर गुवाहाटी. सो I would be in real trouble. And today is my 3rd day in Shillong. और I thought why not go to this amazing place called Doki. Doki river जो है which is one of the cleanest river in the world. And Bangladesh, Indo-Bangladesh border पे है. I'm sure you must have seen or heard about it somewhere or the other. If not, you're living under a rock, my friend. That's one place I'm gonna visit. दूसरा place जो है is a Living Roots Bridge. तो basically एक झाड़ का जो पूरा roots है उससे पूरा एक ब्रिज बना हुआ है. वो मैं जाकर देखने वाला हूँ आज. दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर. एंड इट्स बिन क्वाइट अ वाइल. 30 डेज से मैं घूम रहा हूँ मेरे बाइक पे. मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाइक मुझे कह रहा है यू नो व्हाट, आई थिंक आई नीड टू लाइक चिल फॉर अ बिट, टेक अ ब्रेक. ऑब्वियसली ब्रेक, यू नो, ब्रेक पैड्स, कंट्रोल. I thought, you know what, let's give my fat boy a break. और मैं खुद जाऊँगा एक्सप्लोर करने के लिए. What I have done is I have taken a bike on rent, and the bike that I've taken on rent is this one. ये है एप्रिलिया का 160cc का बाइक. सर ये तो टट्टी है. थैंक यू. एंड अगर आप देख के अभी हंस रहे हो तो हंसो भाई, बिकॉज मैं खुद भी हंसा था. बिकॉज देयर वाज नो अदर बाइक अवेलेबल. हिमालयन नहीं था और रॉयल एनफील्ड का कोई भी और बाइक नहीं था जो यहाँ पर चल सकता है. तो आई सेड आई डोंट केयर, आई एम गोना डू दिस एनीवे. एंड आई नो एटलीस्ट अ फ्यू पीपल इन माई लाइफ जो ऐसे कारनामे कर चुके हैं. डॉकी का जो रोड है इज़ नॉट अ वेरी गुड रोड. थोड़ा शुरुआत में अच्छा है बट towards the end it's really bad, I've heard, and I don't think it's a place a fat boy, at least in this condition right now, my fat boy is meant to go. अगर मेरा fat boy भी 100% में होता I would have definitely taken my fat boy, no doubt at all. But I really don't want to get stuck there at you know, just because I'm being silly and just because content के लिए nonsense करना, I don't believe in that. I respect my fat boy a lot. I love my fat boy a lot. मुझे उसको बिना मतलब के उसको stress नहीं देना है. So I gave it a break and I'm taking this little baby, the Aprilia 160cc का engine है. छोटा है but do not underestimate the power of small things guys. You girls out there might know what I'm talking about. No, not about me of course, but anyway yeah, so I'm all set now. मैंने अपना पूरा gear पहना हुआ है. मेरा जूता, हार्ली का सब gear पहना है and I'm going on the Aprilia and I'm really excited about it. It's a little small bike मेरे size के हिसाब से, but I really don't care. As long as I'm getting to the point, I don't really care. It's okay. And also for a change, you know, it's so easy to maneuver यार. You know, it's not unlike my fat boy. मतलब बहुत आसान है maneuver करने के लिए, तो वो बहुत आसान हो जाता है. Of course, I miss the power part. इसमें पावर बिल्कुल भी नहीं है. इंक्लाइंस में थोड़ा
ऐसा लगता है कि मैं उतर के चल के चले जाऊँ बट इट्स ओके, इट डज इट्स जॉब। स्लो है बट अच्छा है। इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर टू मैनेज विच इज़ गुड, दैट इज व्हाट आई वांट। एंड वो जो गन्ने वाले रोड्स है इस पर तो मक्खन जैसे चल जाएगा। इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छा है अप्रिलिया का, आई हर्ड, सो इट शुड बी फाइन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रिप। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। बाय द वे मैं सबसे पहले लिविंग रूट्स जा रहा हूँ, नॉट डॉकी रिवर। सो लिविंग रूट्स पहले देखेंगे। यहाँ से करीब 89 किलोमीटर्स का रास्ता है। इट शुड टेक अबाउट 3 hours to reach for a normal human being. Let's see how much time it takes me. This is one of the best things I've done in my life. अगर आपको इसको देख के थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिलता है कि दुनिया एक्सप्लोर करने का, कंफर्ट जोन से निकलने का आपको मन करता है या इंस्पायर करता है, मैन आई हैव डन माई जॉब। एट द सेम टाइम do something that other people might have not done, and but thanks for all the support, guys. Thanks for watching, thanks for messaging me on Instagram. There are some of you guys out there who really motivate me, guys, and thank you so much for that. You guys know who I'm talking about. I will keep doing this. अभी तो फिलहाल मैं मिडवे ही आया हूँ। अभी मुझे यहाँ से वापस भी जाना है, यहाँ से अरुणाचल जाना है, अरुणाचल से वापस जाना है, तो काफ़ी लंबा जर्नी है। तो या फिंगर्स क्रॉस मैन, लेट्स डू दिस। शिलोंग से निकलते ही कुछ 30 मिनट बाद रोड पे डाइवर्जन आता है। वन गोज टुवर्ड्स जोआई विच इज द लॉन्गर एंड मच बेटर रूट एंड द अदर टुवर्ड्स पोमलखराज ऑन NH206. The latter is what I took. The next hour is just paradise. The roads are great weather, great views of the East Khasi Hills, water bodies, greenery everywhere, just perfect. कुछ 1.5-2 घंटे के बाद आता है ये स्ट्रेच विच आई कैन से इज लाइक द ट्रेलर ऑफ द हॉरर फिल्म आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस शॉर्टली। For the next 30 minutes, what you see here is mostly what you'll get. And some places even worse. Your patience, your pichpada, reed ki haddi, your wrist, and even your balls are going to be put to the test. So be prepared. जो हॉस्टल का जो ओनर था उसने सही बात बोला था, शॉर्टर रूट इज़ रियली बैड। 5 किलोमीटर्स ऑफ कंप्लीट ऑफ रोडिंग, इट्स रियली बैड। मैंने कैसे ये वाले बाइक में अप्रिलिया में किया है, ओनली आई नो, अनबिलीवेबल गाइस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। नो रिग्रेट्स, आई हैड फन, बट मैन बाइक का कुछ बताऊँ तो आपको, सस्पेंशन बहुत फर्म है। आई वाज बाउंसिंग ऑल द प्लेस। बाइक लाइट भी है, सो इट्स लाइक आई विश द सस्पेंशन वाज स्लाइटली सॉफ्टर, आई विश द सीट वाज स्लाइटली सॉफ्टर। थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्म है, बम पे मस्त, मतलब मुझे लगता है ब्लिस्टर्स आने वाले हैं। और हैंडल पकड़ के आई थिंक मेरे हाथ में भी ब्लिस्टर्स आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सच अ लाइट बाइक, नॉट यूज्ड टू इट, बट ग्राउंड क्लियरेंस इज फैंटास्टिक, कहीं भी बॉटम आउट नहीं हुआ। सस्पेंशंस हेल्ड अप प्रीटी गुड, मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा। ब्रेक्स आर रियली नाइस, ABS है रियली नाइस, सॉर्टेड शिट। सो या वो जो एक जवाई करके विलेज आता है, उसके वो वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, बट द रोड इज़ मच बेटर। आई एम इनफैक्ट मैं व्हेन आई एम कमिंग बैक आई थिंक आई एम गोना ट्राई दैट रूट। एंड मेरी स्वेटशर्ट की तो बैंड बज गई है, कलर चेंज हो गया मेरा स्वेटशर्ट का। एनीवे गाइस, ऑन एंड ऑनवर्ड। 2.5 घंटे के बाद मैं पहुंचा लिविंग रूट्स के पार्किंग बे में, लुकिंग एज इफ आई हैव कम आउट ऑफ एन आटे की चक्की। दिस इज द वे टू द लिविंग रूट ब्रिज। बाइक मैंने पार्क कर दी है, मेरी अप्रिलिया मैट ब्लैक वाली। That was a crazy ride man, crazy ride, but so easy to maneuver the bike, it's not even funny. मज़ा आ गया। हल्का है मेरे टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा, but it's okay. Another thing is, for a change, it is so nice to just leave the bike and not worry about it over there. That feels so good. Usually फैट बॉय को कहीं भी पार्क करूँगा तो पूरा टाइम मेरा दिमाग में वही चलता रहता है कि फैट बॉय कोई टच तो नहीं कर रहा है, कोई ये तो नहीं कर रहा है, कोई वो तो नहीं कर रहा है, अलार्म तो नहीं बजा। So that is a good feeling for a change in the last 30 days. So yeah, वैसे अभी भी सोच रहा हूँ, फैट बॉय is back in the hotel, so it's still alone. The long walk toward the bridge is surrounded by a village जिसके लोग यहीं पर काम करते हैं। Tourism is a big factor that enables their livelihood. So when buying things from here, अपने अंदर के चीपड़े को कंट्रोल में रखना, negotiate मत करना, इनफैक्ट एक्स्ट्रा टिप देके जाना। और लॉन्ग वॉक की बात की जाए तो एक्सपर्ट टिप। Getting to the Living Root Bridge is almost a 20-minute walk that involves going up and down many stairs made out of stone. So if you're not the fit kinds or might have some form of heart condition or weak joints, I wouldn't recommend coming here. Instead, मेरे ब्लॉग देखकर पेट भर लो। गजब बेइज्जती है। It's going to be a task getting up here.
Like most clubs in Mumbai, यहाँ पर भी मुझे stag entry के पैसे देने पड़े. As I walked into this beautiful yet mysterious hideaway in the midst of a forest, I felt nothing but amazement. You know, नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ bridge completely natural है, right? पर नहीं. These bridges were actually made by the Khasi tribe after guiding the pliable roots of the rubber fig tree across a stream or river and then allowing the roots to grow and strengthen over time until they could hold the weight of a human being. और ये जो मेरे जैसे जवान roots हैं, उनको by hand tie और twist करके combine किया जाता है via the process of inosculation, which basically means the trunk, branches and roots of two different trees grow together in a manner similar to grafting. And as they are living, growing organisms, they can survive for hundreds of years in ideal conditions. Pretty cool, huh? Admiring this beautiful creation that was a result of human beings working in cohesion with Mother Nature was heartwarming almost. ऐसा लगा सपना देख रहा हूँ. उसी वक्त साइड में खड़े निब्बे को पोज मारते हुए देखकर मैं वापस जमीन पे आ गया. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अब रूट ब्रिज पे आया ही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना ही कुछ रूट टाइप का लंच भी कर लूँ. This white looking thing which is kind of like the cousin of the tapioca root is served with chaat masala and definitely looked delicious. But it was not. It was dry, bland and I could barely swallow it. इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी मैगी से काम चला लेना चाहिए. So bloody hot bro. कपड़े उतार दिए मैंने. 3 layers bro. सब निकाल दिए मैंने. है ना. Sweating like it's not even funny. शक्ल देखो मेरी. अभी मैं जा रहा हूँ Dauki, which is like the cleanest river in the world, in Asia or whatever. Something I'm saying something wrong, but I'm like so. It was so hot today. But anyway, heading to Dauki now. I'm late now. I was supposed to reach there by like 1 o'clock. It's 1:10 now. देखते क्या टाइम को पहुँचते. Mind you, these areas are pretty much low to no network zone, so don't expect too much help from Google Maps. How did I manage? Easy. I just look at the sun and the angle the sun moves. I'm kidding. I asked the locals for help. Guys, अगर आप clearly देखोगे वहाँ पर बांग्लादेश है उस साइड पे. मैं बॉर्डर की तरफ से चला रहा हूँ basically. It's a mad road, man. Love it. यहाँ पर कोई ADV तो कितना मजा आता है यार. The only way you'd get to experience these mad windy roads is if you go to Dauki via the Living Roots Bridge. Also, if you're in Shillong and planning to visit Dauki, I'd strongly suggest you take this route on your way to Dauki and then go back via Jawai village where the roads are much better. That's what I was saying, guys. वो जो है, that is Bangladesh. All of that. You see that river there? That's what it is. That's वो Dauki river ही है basically. That entire thing. It's freaking amazing, guys. It's amazing. So ये जो झाड़ है आपको दिख रहा है सब जगह. Can you guess where it is? Tell me. Guess करके बताओ क्या है. छोटे गोल सा जो दिख रहा है आपको. I can smell that so strongly, guys. You know what it is? I'll give you 3 seconds. 3, 2, 1. No. Doggy, can you guess it? Well, it's supari, guys. वो yellow सा दिख रहा है आपको. That is actually supari का झाड़. That is so cool. Also known as kwai, the locals are obsessed with it and usually always have it in stock, as it is said that running out of supari is a bad omen. Nice. Basically चढ़ान के ऊपर से आया था मैं. अभी नीचे उतरा हूँ. And अभी रिवर के लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया हूँ. ऑलमोस्ट आ गया हूँ. You can see it there. It is so pretty, man. First line of defense का जो दिख रहा है आपको वहाँ पर पीछे camouflage में. That is the first line of defense. Pretty cool. That's the border wall. Crazy. उस तरफ में बांग्लादेश है, इस तरफ में इंडिया है. अंडरस्टैंडिंग ये देखो. ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर. You see this? That's the Bangladesh border. That's how close I am. And अभी हम जा रहे हैं Dauki, which is right here. You can see that. वहाँ पर हम जा रहे हैं. Should take me another 10-15 minutes to reach, and it's already 2 o'clock. I'm really late. I'm not going to spend too much time there. Quickly I'll grab a bite और वहाँ से निकल जाऊँगा मैं. कितना दूर है पेट्रोल पंप आपने बोला? 4-5 किलोमीटर पकड़ेगा. अच्छा, आपने अभी देखा तो वापस बढ़ गया पेट्रोल. अजीब है. थैंक यू भैया. 4 लीटर का पेट्रोल भराया. Supposed to give me 40 का माइलेज, 40-45. मैंने चलाया होगा 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर. ऑलरेडी फ्यूल टैंक एम्प्टी पे अभी बता रहा था. आई वाज लाइक व्हाट द हेल डूड. अभी तो मतलब यहाँ तो कोई पंप भी नहीं है. बट लकीली दिस गाय से कि अभी बाजू में एक पंप आ रहा है. तो हाल फिर इट अप अगेन. अजीब है यार भाई ये टैंक.
Finally, I was at Dauki, दूध का दूध पानी का पानी करने. Is this the cleanest river in India? का नाम क्या है? बारिक. ये मुझे मिल गया अभी रैंडमली और हम कर रहे हैं बोटिंग अभी जाके थोड़ा टाइम के लिए. बहुत एक्चुअली लेट हो गया, इधर तक आया तो देख ही लेंगे. तो पानी इससे भी ज़्यादा क्लियर होता ना भैया? मतलब ऐसा ही क्लियर होता है लेकिन इससे ज़रा और आगे में मिलेगा क्लियर. अच्छा, इसके आगे ये बोट चल के जाता है. इससे बोला सर वो देख लीजिए, पूरा अच्छा लगेगा आपको. नहीं 20 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं है, सीरियसली टाइम नहीं है. बात यहाँ पर स्कूबा डाइविंग भी होता है. सर आपका नाम क्या है? दो नाव. तो अगर आप यहाँ पर आए और डाइविंग भी कर सकते हो. मुझे पता नहीं था डाइविंग भी होता है. जल्दी आता. मैं एक्चुअली आई वेंट टू दैट, आई गॉट लेट देयर. आई रीच्ड एट 12. तो मैं ये सब बोटिंग डाइविंग भी कर लेता हूँ. Anyway, next time. Dauki River flows between India and Bangladesh in West Jaintia Hills district in the state of Meghalaya. The river is known for its cleanliness and transparent water with visible riverbeds. ये दोनों देशों के बीच ट्रेड रूट होने के कारण काफी बिजी भी होता है. They say on extremely busy days up to 500 trucks have crossed between the borders. मुंबई. Dauki Bridge, जो वहाँ दिख रहा है, is a suspension bridge constructed in 1932 by the British. It's still functional and it's the same one I'll be using to go back to Shillong via Jawai. As we set sail on my quest to find out whether the river was the cleanest, I immediately saw a plastic bottle floating at a distance. कचरा बहुत फेंकता है पब्लिक इधर. Now, whether it's a tourist or the locals, हम सबको collectively initiative लेना होगा to protect our environment. And that's the truth. बट ये सबसे क्लीनेस्ट वाला रिवर तो 100% नहीं है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कचरा इन दिस. सो या दैट वाज अ बज़किल. क्या मच्छी मिलता है क्या? वो मछली हम हिंदी तो नहीं जानता है. क्या बोलते बंगाली बोलते हैं क्या? नहीं, खासी में क्या बोलते हैं उसको? गोवाल. हाँ, कलामास वो हिंदी ना. अच्छा. कितने का रहते? वैसे in case if you're not in a hurry like me, you can reserve the tents on the river banks for some 2,500 odd rupees and stay here for 2 nights. चाय हो गया मैडम? चाय थोड़े ही आगे जाकर बोट ड्राइवर ने पिट स्टॉप ले लिया. मैंने तो चाय और पाइनएप्पल ले लिया, बट लाइक मोस्ट लोकल्स ही प्रेफर्ड सुपारी. नॉट सरप्राइजिंग. ब्यूटीफुल Dauki. बहुत सुंदर है. बट यू कैन सी देयर इज स्टिल कचरा एवरीवेयर ऑन द लेक. इट्स नॉट द क्लीनेस्ट river like they claim it is. I've seen much cleaner rivers. ये reality है भाई. When you travel you see stuff like that, breaks your heart. Bare minimum that you can do is not to throw कचरा. जब आप travel करते हो कचरा मत फेंको यार. डस्टबिन्स होते हैं या तो अपने बैग में रखो. I can't stress this enough, but that's what it is. Thank you again for watching my channel and my videos, guys. Thank you so much for your support. This is Meghalaya. This is Dauki. And I'm gonna sign out now. I'm heading to my next destination tomorrow, which is Guwahati again. मेरा गाड़ी का ब्रेक पैड्स फिक्स कराना है. वहाँ से मैं करूँगा अरुणाचल का प्लान. एंड या दैट्स दैट. उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है बोट का. दैट्स दैट गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. Cheers. Such a long journey just for a 30-minute boat ride might not be enough, but for now I was happy. I even got the opportunity to experience a truly magical place like this. And hopefully when I'm back the next time, these plastic bottles would be where it rightfully belongs. ब्लॉग तो हो गया भाई. फ्यूल भरना सबसे पहले. फ्यूल मैंने भर दिया है. दिस ब्लडी एक्चुअली इसका जो इंडिकेटर है, इसके इंडिकेटर में इशू है. कभी कभी नीचे जाएगा, कभी कभी ऊपर जाएगा. इट्स जस्ट बीइंग वेरी मूडी. बट मैंने 1 लीटर ऐसी सेफ्टी के लिए भर दिया. इतना पेट्रोल का टैंक फर्स्ट निकलने वाला शिलोंग के लिए. That's about it guys. I am gonna sign out now finally. See you next one. Cheers.